All right, so today we are going to learn something very interesting which is called as Rayleigh's criteria. अभी Rayleigh's criteria क्या होता है we will see. It is very simple topic. So let me just start by giving it a title. Rayleigh's criteria. Okay, so I'll just explain you what is the basic idea behind it. देखो basic idea is very simple. What we know is अगर हमारे पास एक लेंस है, let me take a lens. हमारे पास अगर एक लेंस है and if we have a point source, we have a point source of light over here, right? तो जब लेंस में से ये लाइट का सोर्स से जो रेज आएंगे, the rays passing through this source of light, coming out from this source of light and passing through lens, इसका एक इमेज बनेगा. We already know that an image will be formed. Image formation के बारे में हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है. We already have went through ray optics. So ideally if you have a point source, तो उस point source का image भी एक point बनना चाहिए ideally, right? So according to the geometric optics, the image of a point source produced by an optical instrument like lens should be a point. तो image भी point बनना चाहिए. But in practice, when rays of light pass through circular aperture like lens, so instead of having an image in the form of point, we get image in the form of diffraction pattern. तो आइडिया बहुत सिंपल है. आइडिया ये है, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का इमेज भी एक पॉइंट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. लेकिन if the rays of light coming from a point source, if they're passing through circular aperture like lens, तो उस केस में instead of image being a point, image बनता है diffraction pattern. diffraction pattern बनता है, मतलब क्या होता है? So I will just give it some name. Let us say ये हमारे पास है A and A is nothing but point source. So A is point source और यहाँ जो image बनेगा that is A dash, let us say. तो what we expected was कि यहाँ पे जो image बनेगा that should also be a point. But in reality ये जो A dash बता रहा हूँ मैं, A dash will look something like this and I am going to draw it in the next figure. So A dash in reality is going to look something like this. तो bright band होगा center में and then you have a dark band. So I have to use it other way around because then it will create confusion. So what we expect is something like this. सेंटर में ब्राइट डिस्क, फिर ये जो रिंग दिखाया है डार्क रिंग, फिर वापस से यू विल हैव ब्राइट रिंग and then dark ring, so on so forth. Let me use even thicker, yeah, something like this. ओके, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसका इमेज भी एक पॉइंट होना चाहिए. बट हो क्या रहा है, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो उस पॉइंट सोर्स
में से जब रेज ऑफ लाइट पास होंगे, मतलब इमिट होंगे, और वो जब रेज ऑफ लाइट लेंस से पास होंगे, तो हमें एक इमेज मिलना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, बट इन रियलिटी हमें एक पॉइंट इमेज की जगह पे हमको मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो. फिर अगर हमारे पास दो पॉइंट सोर्सेस है, मान लेते हैं दैट वी हैव टू पॉइंट सोर्सेस. तो वी हैव टू पॉइंट सोर्सेस. बाय द वे, ये ए डैश का इमेज था, मतलब ए डैश का डिफ्रैक्शन पैटर्न था. वी हैव अनदर पॉइंट सोर्स बी, और उसका भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा यहाँ पे बी डैश. इसका भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा बी डैश. आई एम नॉट ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर द टाइम बिंग. रे डायग्राम की हमको जरूरत फिलहाल नहीं है समझने के लिए. ओके, तो अगर एक पॉइंट का इमेज जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न के फॉर्म में है, तो दूसरे पॉइंट का भी इमेज डिफ्रैक्शन पैटर्न के फॉर्म में होगा. सो व्हाट वी विल सी इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने वाला है. ओके, so we are going to see something like this. तो दो पॉइंट तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट. तो आइडिया शुड बी वेरी क्लियर. आइडिया ये था, एक पॉइंट है, और अगर उसके रेज ऑफ लाइट एक लेंस मतलब सर्कुलर एपर्चर से पास हो रहे हैं, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमको पॉइंट सोर्स का इमेज भी एक पॉइंट मिलना चाहिए, बट हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. तो अगर दो पॉइंट है तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. अब ये क्वेश्चन है कि ये जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है हमारे पास, ये दो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों को सेपरेटली हम लोग देख सकते हैं या नहीं, सेपरेटली देख सकते हैं या नहीं. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? I am saying this that whether we can see this separately or not basically depends on this distance, let us say small d between A and B. तो A और B के distance पे depend करेगा whether the two diffraction patterns are seen separately or they overlap on each other. देखो, अगर दो पॉइंट सोर्सेज बहुत पास में है, तो उन्होंने जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस किए हैं वो भी बहुत पास में है. यू हैव टू कनेक्ट. If you have two point sources placed very near to each other, then the two diffraction patterns produced due to this point sources are also very close to each other. Diffraction pattern actually they overlap. If these two point sources A and B अगर ये बहुत पास में है, तो उनके diffraction pattern overlap होंगे. ओवरलैप होने का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट सी टू पैटर्न्स देयर. आपको एक ही पैटर्न दिखेगा. क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है, राइट. बाय द वे, ये जो पैटर्न बना है ना, इसका जो सेंट्रल डिस्क है, यू कैन सी व्हाइट कलर एट द सेंटर. दैट सेंट्रल डिस्क इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क. अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा, आपको लग रहा होगा कि व्हाइट ये जो कलर है बैकग्राउंड से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ सेंट्रल डिस्क का, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रल डिस्क इज अ ब्राइट डिस्क, राइट. तो सेंटर में हमेशा ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क रिंग दिखेगा, फिर ब्राइट रिंग दिखेगा. समथिंग लाइक दिस, आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर. राइट. तो ऐसा हमको पैटर्न दिखता है. तो जो सेंट्रल ब्राइट डिस्क है, सेंट्रल ब्राइट डिस्क दैट वी सी ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क. तो ये जो सेंटर में ब्राइट डिस्क दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क. सो आई जस्ट गिव इट अ नेम समवेयर.
This central disk is Aries disk, and this Aries disk is surrounded by alternate bright and dark rings. This particular disk, which is Aries disk, as you can see, it is surrounded by alternate dark ring, bright ring, dark ring, bright ring. Okay, so as I was telling you, if the distance between point sources A and B is very small, then these two pattern overlap. दोनों पैटर्न का ओवरलैप होने का मतलब क्या है? ओवरलैप होने का मतलब अगर आप सोचोगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी डायग्राम, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था. इफ यू रिमेंबर, डिफ्रैक्शन पैटर्न का हमने इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था. इन दैट केस व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, वी प्लॉट इंटेंसिटी अगेंस्ट साइन थीटा. यू नीड टू रिमेंबर दिस, आपको ये याद होना ही चाहिए. सो यहाँ पे साइन थीटा प्लॉट किया था हमने, और along y axis we have plotted intensity, something like this. तो ओवरलैप होने का मतलब क्या होता है? ओवरलैप होने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर a पॉइंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, ओके, राइट, और b पॉइंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न, आई विल यूज सम डिफरेंट कलर, इट इज समथिंग लाइक दिस. मोर और लेस समझ लेना. एग्जैक्ट ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है. Exact overlapping है तो there is no question that you can see two different diffraction pattern, you will see only one diffraction pattern, right? Okay, इसको बोलते हैं unresolved. It is called as unresolved. अब मैं आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा what exactly is the meaning of unresolved patterns. अब imagine हम ये A और B पॉइंट सोर्स को थोड़ा थोड़ा सा दूर करते जा रहे हैं. जैसे हम लोग इसको दूर करते जाएंगे, as you are separating A and B, जैसे जैसे तुम ए और बी को सेपरेट करोगे तो दोनों में से एक का जो पैटर्न है इट विल स्टार्ट मूविंग, सेपरेट होते जाएगा. लेकिन फिर भी मुझे अभी भी एक ही पैटर्न दिख रहा है. आई कैन नॉट सी टू डिफरेंट पैटर्न्स. मैंने और डिस्टेंस बढ़ा दिया, ए और बी पॉइंट सोर्सेस में. तो एट वन पॉइंट व्हाट आई विल नोटिस इज समथिंग लाइक दिस. व्हाट आर वी नोटिसिंग हियर? वी आर नोटिसिंग कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा, किसका, द वन इन द रेड, एक का सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो दूसरे के फर्स्ट मिनिमम के साथ, द वन इन द ग्रीन. देखो ये फर्स्ट मिनिमम है, यहाँ पे जो नीचे मैंने क्रॉस किया है दैट इज फर्स्ट मिनिमम ऑफ ग्रीन. मतलब मान लो कि जो ये बी डैश है उसका फर्स्ट मिनिमम और ए डैश का सेंट्रल मैक्सिमम, दे ओवरलैप. तो दिस particular situation is called as just resolved. मैं डायग्राम्स वापस ड्रॉ करने वाला हूँ, but this particular situation is called as just resolved. just resolved मतलब अब हमको जस्ट दो पैटर्न हमको दिखने लगे. तो आइडिया क्या था कि अगर A और B, if these two point sources are very close to each other, then इन दो पॉइंट सोर्सेस का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ओवरलैप हुए एक दूसरे के ऊपर. मतलब हमको दो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने चाहिए थे बट हमको एक ही दिख रहा है. फिर हमने ए और बी पॉइंट सोर्सेस का डिस्टेंस बढ़ाना चालू किया. जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इंटेंसिटी डायग्राम का, अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी डायग्राम अगर आप सोच रहे हो तो दो पैटर्न जो है धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, राइट. एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस सिचुएशन में सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न overlaps with, coincides with first minimum of second diffraction pattern. तो ये जो डायग्राम में मैंने बताया है आपको, ये आपका हो गया सपोज ए डैश मतलब पहला डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये हो गया बी डैश मतलब सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो इस केस में ए डैश का सेंट्रल मैक्सिमा और बी डैश का फर्स्ट मिनिमा ओवरलैप हो रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व. दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज जस्ट रिजॉल्व, क्योंकि अभी जस्ट मुझे दो पैटर्न देखना शुरू हुए.
अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न समझना है, तो इन टर्म्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न यू कैन से दैट you will see something like this. ऐसा आपको दिखना शुरू होगा. You can see two separate central disk, which is Aries disk, becoming separate from each other. जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, पहले क्या था, पहले ऐसा था, एग्जैक्टली ओवरलैप था. अभी डिस्टेंस बढ़ना चालू किया मैंने, ए और बी का क्या होने लगा, एज आई एम इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग लाइक दिस, राइट. ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे पास. इन दिस सिचुएशन, I will exactly show what is happening. In this situation, what is happening is, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा ऑफ ए का फर्स्ट मिनिमा, ए का फर्स्ट मिनिमा बी के सेंट्रल मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हुआ. यू कैन सी ऐसा ओवरलैपिंग हुआ है. सो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए डैश is overlapping with first minimum of b dash. So in this situation we can say it is just resolved. और उल्टा भी होगा, it is the same. The same मतलब क्या, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर a डैश का सेंट्रल मैक्सिमा b डैश के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप हुआ, तो उल्टा भी है. उल्टा भी है मतलब क्या, b डैश का सेंट्रल मैक्सिमा a डैश के फर्स्ट मिनिमम के साथ भी ओवरलैप हो रहा है. तो what I can show is something like this. तो ऐसा पैटर्न दिखेगा हमको, राइट, करेक्ट. नाउ व्हाट विल हैपन इज, मैंने अगर ए और बी का डिस्टेंस और बढ़ा दिया, मैंने अगर ए और बी का डिस्टेंस और बढ़ा दिया, तो इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व्ड. क्योंकि वेल रिजॉल्व्ड क्यों, मतलब द सिचुएशन दैट वी विल ऑब्टेन इज सिमिलर टू दिस. ऊपर जो मैंने दिखाया है ऐसा सिचुएशन होगा कि दो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको अलग अलग से दिखने लगे, राइट. ओके, so what is Rayleigh criteria? Rayleigh criteria is this criteria: the least distance, the smallest distance for which you see two patterns just resolved. Just resolved मतलब एक का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा ओवरलैप होना चाहिए. दैट कंडीशन इज कॉल्ड Rayleigh criteria. और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. Limit of resolution is the minimum distance between two sources A and B such that the diffraction pattern of these two point sources appear to be just resolved. मतलब the limit of resolution is the minimum distance for which Rayleigh criteria is satisfied. Rayleigh criteria क्या था, एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम के साथ ओवरलैप होना चाहिए. दैट वाज Rayleigh criteria. ये कब होगा, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा बिटवीन ए एंड बी, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो आप बोल सकते हो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यू कैन डिफाइन इन टू डिफरेंट वेज. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके, मैं बाद में लिखूंगा. Limit of resolution is the minimum distance between two sources A and B such that the diffraction pattern of these two sources appear to be just resolved. पहला definition खत्म. और limit of resolution is the minimum distance between two sources A and B such that Rayleigh criteria is satisfied. क्योंकि Rayleigh criteria भी वही बोलता है कि central maxima of one should overlap with first minima of other. दूसरा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, if d is limit of resolution, if d is limit of resolution, और अगर मैं उसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर, राइट. सिंपल है. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन is distance between two point sources such that Rayleigh criteria is satisfied.
1 upon limit of resolution is resolving power. Simple, right? Good. So what we will do now, हमने जो सीखा है, we will one by one write down, and then we will draw this diagrams of what is called as well resolved, what is called as unresolved, and what is called as just resolved. तो इसका हमको intensity diagram के term, we will have to draw intensity diagrams for all these three cases, right? Okay. For the time being, this diagram is important. ये diagram important इसके लिए है because I just want to show you that कि यहाँ पे if you have 2 point sources, what is happening. Anyways, तो मैं I will complete this diagram also. इस डायग्राम को कंप्लीट नहीं किया है हम लोगों ने, तो लेट अस कंप्लीट इट. तो जो भी रेज ए से पास होंगे, ए से इमिट होंगे, those rays which are emitted from A will pass through lens. इस लेंस को कुछ नाम दे देंगे हम mn बाद में, we will just give it some name. They will form, the rays coming out from A will form an image after passing through lens at a position A dash, and this A dash is diffraction pattern. Similarly, the rays passing, the rays emitted from B after passing through lens will form an image at B dash. So the rays are coming something like this. Right. Okay. Then हमको पता होना चाहिए, ये जो बी डैश हमको डॉट दिख रहा है, डॉट क्यों दिखेगा? इमेजिन करो, अगर आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऐसा है कि सेंटर में ब्राइट डिस्क है, फिर रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है, फिर डार्क रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है, फिर डार्क रिंग है, बट सेंटर में क्या है? सेंटर में ब्राइट डिस्क है. तो हमको तो डिस्क दिखता है, इसलिए मैंने डॉट ड्रॉ किया. बी डैश मैंने डॉट इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज व्हाट वी विल सी इज, फ्रॉम फार अवे हमको क्या दिखेगा? वी विल जस्ट सी अ डॉट. बाय द वे, इट इज बेटर दैट आई रिमूव नॉट दिस थिंग. एक मिनट, हाँ. It is better that I replace this black dots. एक minute. I will rearrange these structures because I just want to use. Right. तो बेसिकली अगर हमारे पास एक येलो कलर का लाइट होगा तो हमको एक येलो डॉट दिखता है एज अ इमेज, बट दैट इज नॉट अ येलो डॉट. इट इज इन फैक्ट, it is in fact a diffraction pattern where central disk is bright and then you have dark ring, then you have bright ring. So what I have shown here is this, कि आप लोगों को B का पैटर्न दिखेगा, ये B का image B dash, it will be actually like a diffraction pattern, and A का A dash something like this. So you will have this kind of patterns, right? Now let us just quickly write down what we have understood so far. So far the idea behind Rayleigh criteria was, so according to geometrical optics,
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है. रे ऑप्टिक्स बेसिकली द इमेज ऑफ a point object produced by an optical instrument. अब produced by an optical instrument, optical instrument मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और हम लोग वो इसके आगे देखने वाले हैं what happens if you have a telescope and what happens if you have a microscope. So according to geometrical optics, the image of a point object produced by an optical instrument must be a geometric point. तो सोर्स अगर पॉइंट है तो उसका इमेज भी एक पॉइंट होना चाहिए, राइट? बट in reality what happens is when the beam of light from a point source passes through the objective. अभी ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, यू मस्ट नो. किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, यू हैव टू लेंस. एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस. ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहा है. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप के ट्यूब में नीचे एक लेंस होगा और उसके नीचे आप जो भी आपको देखना है वो उसके नीचे रखा होता है. तो जो दो लेंस है, जो नीचे का लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव, और जिसमें से आप देखते हो दैट इज आईपीस, राइट? सो इन प्रैक्टिस when the beam of light passes through the objective of an optical instrument, with lens, क्योंकि लेंस ही है वो, with lens acting as a circular aperture, acting like a circular aperture, जैसे ऊपर दिखाया है सर्कुलर एपर्चर में से लाइट पास होगा. सर्कुलर एपर्चर, then it produces a diffraction pattern, right? So we were expecting that पॉइंट सोर्स का इमेज भी पॉइंट होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलर अपर्चर लाइक लेंस, this point source, the image of this point source is actually a diffraction pattern, right? और diffraction pattern क्या होता है, you already know. The diffraction pattern is a bright disk, और इस bright disk को हमने बोला है Aries disk. at the center surrounded by, इस bright disk के अराउंड क्या था, alternate dark and bright rings, surrounded by alternate bright and dark rings, right? Okay, whose intensity goes on decrease, हमको ऑलरेडी पता है. डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने देखा था कि इंटेंसिटी कम होता जाएगा. तो याद रखना वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने स्टडी किया था दैट वाज ड्यू टू अ स्लिट. याद रखना वहां पे स्लिट था. इफ यू रिमेंबर ए बी वाज अ स्लिट ऑफ विड्थ ए. तो उस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे दिखता है आपको, उस केस में यू सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न समथिंग लाइक दिस. सेंटर पे ब्राइट, something like this, and then you have dark, and then you have bright with less intensity. तो ऐसा पैटर्न दिखता था हमको. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्लिट था, इसलिए ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क. यहाँ पे पॉइंट सोर्स के रेज जो है लेंस से पास हो रहे हैं, इसकी वजह से यू सी अ स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ rings. Bright disk, then ring dark, then bright ring, then dark ring, and so on and so forth, right? So in any case, चाहे वो ring structure हो, चाहे जो diffraction pattern normal था वो हो, intensity of higher order maximas they become less and less and less. So यहाँ पे भी वही होगा, whose
intensity goes on decreasing. हायर ऑर्डर मैक्सिमास जो होंगे उनका इंटेंसिटी कम होगा, राइट? ओके, गुड, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये हमने बता दिया एक पॉइंट सोर्स का। तो अगर दो पॉइंट सोर्स होंगे तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंपल। ओके, सो इफ देयर आर 2 point sources, if there are 2 point sources lying close to each other, lying close to each other, then so if you have this situation, then two diffraction patterns are produced. Two diffraction patterns are produced. Okay, simple. Now the thing is, these two diffraction patterns may or may not be seen separately. हो सकता है कि ये जो दो diffraction pattern है हमारे पास, these two diffraction pattern overlap. Okay, so you may not be able to see two separate diffraction patterns. These two diffraction patterns may or may not be seen as two separate distinct objects due to overlapping yep, due to overlapping of their diffraction patterns, of their diffraction patterns, right? Good. तो दो सोर्सेस, दो डिफ्रैक्शन पैटर्न होने चाहिए थे, बट वी मे और मे नॉट सी टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू सी टू डिस्टिंक्ट, टू सेपरेट डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को ए और बी का डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एंड एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस you see two different patterns, and that particular distance between two sources A and B is called as limit of resolution. Okay, right? So the smallest angular or linear separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved. Okay, this is the condition. The smallest angular or linear separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved is called as limit of resolution, is called as limit of resolution. ये important है, limit of resolution, right? Good. Of an optical instrument, of course, of an optical instrument. Then अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो that is called as resolving power. The reciprocal of limit of resolution is called as resolving power. Resolving power.
of that instrument. राइट तो बहुत सिंपल सा केस है ये. वी ऑलरेडी नो ऑल दिस. हमने ऑलरेडी ये सब किया है. वी आर जस्ट पुटिंग डाउन टू मेक नोट्स. ओके देन मैंने आपको बताया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू स्टडी इज रेलिक क्राइटेरिया. अब रेलिक क्राइटेरिया मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूँ कि जस्ट रिजॉल्व, मतलब हम जब ये डिस्टेंस डिफाइन करते हैं ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे क्या हुआ मैंने आपको बताया था थोड़ा फ्यू मिनट्स बैक. when we say these two are just resolved, or when we say limit of resolution, the smallest distance between two sources A and B, right, such that you see two different patterns. इस पे हो क्या रहा है? इस पे ये होता है कि central maxima of one diffraction pattern overlaps with first minima of the other, and that is what you call as Rayleigh's criteria. तो हम लोग पहले लिख लेंगे and then finally we will draw diagrams. Okay, so according to Rayleigh's criteria, according to Rayleigh's criteria, the images of two point objects close to each other are regarded as just separated or just resolved, if the central maximum of one falls on the first minimum of the other. You can also say, which means bright central disk, Aries disk falls on the first dark ring of the other. Okay, this means that central bright disk of one falls on the first dark ring of the other. इसको आप बोलते हो just resolved, राइट. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसा दिखेगा. पहले आपको दिखेगा एक के ऊपर दूसरा पैटर्न, देन यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो स्लोली वो दो पैटर्न सेपरेट होने लगेंगे, एंड देन यू सी एग्जैक्टली दैट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इज फॉलिंग ऑन टू द फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर. तो वो हमने ऑलरेडी देखा है. बट in terms of intensity diagram you can do that. So diagram I will draw at the last. Now let us just finish this theory thing, right? Also the two objects are said to be well resolved. तो हमने देखा just resolved या just separated, we have already seen here, like here. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. इसको मैं दे देता हूँ bold में, so that we have definitions for this. Okay, right, good. So the two objects are said to be well resolved
वेल रिजॉल्व मतलब दो पैटर्न आपको अलग अलग दिख रहे हैं एज शोन इन दिस डायग्राम। ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, डायग्राम ए, ये डायग्राम ए में जैसे आप देख पा रहे हो, टू डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व, उसको बोलते हैं हम लोग वेल रिजॉल्व। ओके, राइट। So the two objects are said to be well resolved if are said to be well resolved if 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 what happens if the separation between if the separation between the central maximum of the two objects, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमम है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो एरिस डिस्क है वो, the central maximum of the two objects is greater than the distance between the central maxima and the first minima of any of the two objects, of any of the two objects। एक काम करते हैं, I will say refer figure 2b, वो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो फिगर 2b, and then I'll explain you what I am writing over here। ये फिगर 2b होगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे this is will be figure 2a, राइट। लास्ट चीज रह गई हमारी अनरिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व क्या होता है देख लिया, वेल रिजॉल्व क्या होता है वो देख लिया, क्या बाकी रह गया अनरिजॉल्व। सो the two objects are said to be unresolved, अनरिजॉल्व मतलब आपको एक ही पैटर्न दिखेगा, अनरिजॉल्व if the separation between, ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना है मैंने, if the separation between central maxima of the two objects is less than the distance between central maxima and first minima of any two। ठीक है, हम देखते हैं what does that mean। फिगर 2c, देखो मैं अभी वापस सब बता रहा हूँ क्योंकि आई नो there is going to be some kind of confusion over here, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, तो आई एम गोइंग टू just a minute, yes, right। so what I'm going to do is मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, चीज़ बहुत सिंपल थी, सिर्फ अभी इंटेंसिटी डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम लोग इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वापस समझा देता हूँ कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में नॉर्मली कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हमको ये जो कुछ हमने लिखा है हमको समझना है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी डायग्राम। तो मैं इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, देन we need to have intensity diagram। then as I told you हम लोगों को well resolved, just resolved, unresolved की बात करनी है, तो I'll have to show some
पीक्स मतलब सेंट्रल मैक्सिमास, एक एक करके समझिएगा हमको कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। राइट, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव रोट सो फार, हमने अब तक जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वेल रिजॉल्व का मतलब क्या, अनरिजॉल्व का मतलब क्या, और जस्ट रिजॉल्व का मतलब क्या, ये देखना है। आई विल स्टार्ट विद शोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व में ये था कि सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन, हमको पता है ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ओके, central maximum of one of the diffraction pattern overlaps with first minimum of other diffraction pattern. So as you can see from this diagram, green में जो मैंने मतलब मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट का, बी ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था उसका फर्स्ट मिनिमा, मतलब ग्रीन में जो मैंने बताया उसका फर्स्ट मिनिमा किसके साथ ओवरलैप हुआ, रेड के सेंट्रल मैक्सिमा के साथ, राइट, करेक्ट। So this particular situation is called as unresolved case. So this case, sorry, just resolved case is the case of just resolved, just resolved. This is figure 2. क्लियर, देखो हमने लिखा था ये, हमने बोला ए और बी दो पॉइंट सोर्स, तो उसका जो इमेज होगा ए डैश बी डैश, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉइंट सोर्स वो होंगे दो डिफ्रैक्शन पैटर्न। दो डिफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो सकते हैं, राइट। अभी ओवरलैप उनको नहीं करने देना, हमको उनको रिजॉल्व करना है, मतलब ए और बी जो स्मॉल डिस्टेंस है डी, इसको बढ़ाते जाओ। इस डी को अगर हम लोग बढ़ाते गए तो एट वन स्टेज व्हाट विल हैपन इज दिस, पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप होगा, मतलब हमको जस्ट दो पैटर्न दिखने लगेंगे अब, दैट इज कॉल्ड एज जस्ट रिजॉल्व। देखो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, according to Rayleigh criteria, the images of 2 point objects close to each other are regarded as just resolved if the central maxima of one falls on the first minima of other figure 2a. That is what we have done. Okay. What is well resolved? Well resolved में हमने क्या लिखा? The two objects are said to be well resolved. मतलब exactly दो अलग पैटर्न जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, दो अलग पैटर्न वैसे, right? If the separation between central maximum of the two objects, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन should be greater than the distance between the central maximum and the first minimum of any of these two objects. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा है that there is, ड्रॉ कर लेने दो फिर मैं बताता हूँ कि what is happening। ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया फर्स्ट का, ये सेकंड, yeah, it's too difficult for me to draw sometimes, I don't know, I'm sorry, but ये जो diagrams है they are supposed to be good enough। why why, हाँ ये इसलिए हो रहा है
that my pad has dust particle and it is not letting me go smooth. चलो समझ लेना आप, छोड़ो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम, राइट। तो according to the criteria, the distance between the separation between two central maxima should be greater than, मतलब ये जो distance है, it should be greater than the distance between central maxima and the first minima of any two. तो distance between central maxima and the first minima of any, मतलब ये जो distance है, ये distance d है, this x over here should be greater than d. The distance between two central maxima is x. The distance between central maxima and first minima of any of these is d. So x should be greater than d for well resolved case. तो ये जो डायग्राम b है हमारा, ये है well resolved. तो जो c केस है unresolved, वो क्या होगा फिर? तो unresolved केस में क्या होगा? That x should be less than d. The distance between central maxima of the two is less than the separation between central maxima and first minima of any of these two, right? तो उस केस में आपको कैसे देखेगा? उस केस में you will see something like this. ये पहले का हो गया, and for second you will have something like this. Okay, right? So as you can see, ये जो distance है यहाँ पे x, and if you see the distance between this particular point and this particular point is d, मतलब the distance between first minima and the central maxima of any one of this pattern is greater than the separation between central maxima of the two. That is unresolved case, right? Good. तो आज का सेशन में हमने इन डेप्थ देखा व्हाट इज रेलिक क्राइटेरिया. वी हैव जस्ट डन वन स्लाइड, दैट्स इट. अब हमारे लास्ट दो टॉपिक बाकी है. देखो ये रेलिक क्राइटेरिया जो है, इट अप्लाइज टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. तो इन द नेक्स्ट सेशन ये रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से दो इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे अप्लाई करना है, राइट? रेलिक क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं. मैं आखिरी एक दो लाइन्स में बता रहा हूँ. दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, दो डिफ्रैक्शन पैटर्न. दो डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, यू नो, ब्राइट डार्क ऐसा चलता है. ब्राइट में मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर दोनों साइड पे होता है डार्क, फिर होता है ब्राइट विथ लेस इंटेंसिटी, फिर डार्क. पर यहाँ पे पॉइंट सोर्स के केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एट द सेंटर, फिर रिंग, डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग. अब ये सोचो अगर दो पॉइंट सोर्स है और दोनों पॉइंट सोर्स बहुत क्लोज है, तो उनके जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे वो ओवरलैप होंगे. अगर हमको ओवरलैप नहीं करवाना, हमको रिजॉल्व करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे. तो एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको जस्ट दो पैटर्न दिखना शुरू हुए. उस जस्ट दो पैटर्न जब दिखना शुरू हुए तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो जस्ट रिजॉल्व में मतलब क्या हो रहा है कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा मतलब एक का एरीज डिस्क दूसरे के पहला मिनिमा मतलब दूसरे का पहला डार्क रिंग के साथ ओवरलैप हुआ, तो हमको जस्ट दिखा कि दो पैटर्न अलग अलग हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज रेलिक क्राइटेरिया. सो central maxima of one must overlap with first minimum of other. That is Rayleigh criteria. That is called as just resolved. Well resolved मतलब दोनों के central maxima मतलब दोनों के aries disk का distance, it should be greater than central maxima and first minima of any of these two. That is well resolved. So distance between central maxima and central maxima should be greater than distance between central maxima and first minima. Well resolved. Unresolved मतलब this distance between central maxima and central maxima should be less than central maxima and first minima of any of these two. Unresolved. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है और यही हमने डायग्राम
से शो किया है, डायग्राम ढंग से नहीं आया है, बट ओके, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट take that and copy it from internet and send it to you. Okay, right.